everyone, very good evening and welcome to BYJU'S exam prep. My name is Alpa Sharma and we are going to be talking about newspapers in today's session. If all of you could quickly confirm that I'm clearly audible and visible to everyone watching me live, we shall commence with the agenda of the class that is discussing, is it important for you to read newspapers if you're targeting CLAT 2025? Also, if you think it is important, when should you start? What should you read? All of these questions we're going to be answering in today's session. So, jaldi se ek baar confirm kar do if I'm clearly audible and visible. तो हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीजें क्लास में एक बार जल्दी जल्दी ना एजेंडा देखते हैं क्लास का एजेंडा क्या है व्हाट्स द flow of the session what are the questions we're going to be answering so the first question of course is answering this very basic question if you're targeting CLAT 2025 should you actually be reading newspapers as early as this because it is barely uh, the first half of 2023 has not even completed. So should you start as early as this? And if you should, then the question is that when should you start? And the third question is what should you read so that you're able to grasp the basics of it that is expected out of you. So ये तीन questions answer करने की कोशिश करेंगे. Hi Arshita, class में. Okay, but before I start talking about the agenda, a couple of things that you need to know. One, again, if you're targeting CLAT 2024, I'm going to be coming live on 21st of May, 6 p.m. And in this session, I shall be talking about what should your strategy be so that you can ensure a seat in an NLU. So make sure you register yourself beforehand. It's a free workshop, but register karna zaruri hai. Register kar lena. And we've launched our CLAT 24 comprehensive course, our online classroom program. If you wish to know more details about the program, you can call our counselors on this number. They'll let you know more about that. And we have a scholarship test that's going on. It's going to be happening on 14th of May, 11 a.m. If you wish to prepare for CLAT, make sure you sit for the scholarship test. इसको miss नहीं करना. Remember, पहले register कर लेना 14th of May, 11 a.m. Okay, hi Vaibhav, hi Chandresh. Okay, so back to the agenda of the class. We were about to discuss is reading newspapers important for CLAT 2025 as soon as the mid of 2023. Before I answer this question, I want you to do a brief exercise. Once you read this extract from the Hindu, you'll get an answer to various questions coming into your head. And this extract will pave our way into the answers of these questions. So everyone, read the extract that I have. बहुत छोटे से दो paragraphs हैं, ठीक है? एक बार ये दोनों paragraph पढ़ लो. Read this and send me a done. फिर हम बात करेंगे कि कितना important है आपके लिए newspaper पढ़ना, क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना. We'll talk about that. Read the page and send me a done. Hi Nahid, please read the page. पेज पढ़ के एक बार सेंड मी अ डन फिर बात करते हैं थोड़ी सी न्यूज़पेपर्स के बारे में. Done. Okay. Now, does this extract look familiar to anyone? देखा देखा लग रहा है कहीं ये? Yeah? I'll tell you what. So, Alia? Okay. So I'll tell you why does it look familiar to you. ये एक extract है that appeared in the Hindu, okay? And
from the Hindu, this was picked up and it appeared in CLAT लास्ट दिसंबर में, जो दिसंबर 22 में एग्जाम हुआ था, उसमें ये एक्सट्रैक्ट आया था. ओके और ये एक्सट्रैक्ट इट अपीयर्ड फ्रॉम द हिंदू. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज दैट ऐसे एक्सट्रैक्ट्स एब्सोल्युटली आते हैं एग्जामिनेशन में. दिस अपीयर्ड अंडर द लीगल सेक्शन. ओके सो ऐसे एक्सट्रैक्ट्स एग्जाम में आते हैं, आते रहे हैं और आगे भी आएंगे. They can appear in various sections. In fact, across the paper, we have 5 sections. ये पांचों sections में से कहीं भी appear हो सकते हैं. ये ऐसे extracts हैं जो newspaper से picked up हैं. तो ये extract पढ़ के I think कुछ questions का answer आपको मिलता है. That reading newspapers is very, very important for us in terms of various sections. That of course appeared, the extract that we read appeared in the legal section. बट देखो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप अपने करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं जो इजीली 40-45 मार्क्स के आ सकते हैं. सो दैट्स द फर्स्ट थिंग हियर राइट नाउ दैट वी कैन आंसर. इफ यू स्टार्ट ऑफ विथ रीडिंग न्यूज़पेपर्स, you start preparing for current affairs as sooner as possible as compared to other people. अब देखो I'll be answering a few questions here. We have a big chunk of questions coming up in current affairs section. We might think कि मैम हम आप हमको CLAT Ignite magazine देते हो. We can prepare it through the CLAT Ignite magazine. We can follow your website, your app. वहां से we can watch Salik sir's short video, Salik sir's Hindu analysis. Will that be enough for our GK preparation? The answer is a simple, crisp and short answer to it. No, that isn't enough. Because that's like spoon feeding. That's like revision. If you don't do your homework in the background, you wouldn't understand anything. Remember, current affairs, most of you right now will not be very, very good with. And it needs time and consistency to develop. Current affairs has a related background. And when we have GK coming up in the examination, it's not purely current affairs. It's static as well related to the current affairs. If you don't know the story of the background of the news coming up, you will not be able to answer that question. And how do you know the story? By starting off early. So start reading newspapers regularly, first and foremost, to ensure that you know a background of what's happening. So for example, if you're sitting for CLAT 2025 and a question comes up on the G20 summit and who hosted the G20 summit in 2023 comes up, you probably might not know if you start preparing later on. But this year you would know because this year India is hosting that summit. So it's a related story that's going to be important. You have to work on. So the first question, of course, is answered here. You have to start reading newspapers as early as possible so that it helps you with your current affairs. Second, it of course will help you with your legal issues. You remember we read an extract. It appeared in the legal reasoning section. There were questions based on that extract. How do I understand that? You guys aren't lawyers yet, right? You're just preparing to be one. You're sitting for an entrance examination. उस लेवल पे आपसे जो अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट की जाती है वो आप इजीली अटेन कर सकते हो अगर आप न्यूज़पेपर में रेगुलरली लीगल इश्यूज को टच अप करते आते हो. खुद कवर अप करो एंड देन यू कैन अटेंड Salik sir's The Hindu class daily. He would touch upon the legal issues as well. But remember, what is the news currently, specifically pertaining to the legal issues, becomes supremely important because it can directly come up in the GK as well as the legal reasoning section. So for that, of course, newspapers are important. Third thing, newspapers are important for the English section as well. The entire section is reading comprehension based. Many extracts have been picked up from the newspapers. They talk a lot about current affairs issue. They talk a lot about what's happening around the world, international, local news that's there making rounds. So it will help you, one, understand passages. Two, it will improve your vocabulary. Three, it will help you analyze
arguments which will help you answer one basic question, the main theme of the passage, which is abundant in the examination. Main theme question बहुत आता है examination में. और अगर आप argument समझते हो author का, जो कि आप editorials में देखते हो, आपके लिए वो main idea question को answer करना बहुत आसान होता है. So हमने 3 sections देखे जो हमको help कर न्यूज़पेपर पढ़ना हमको हेल्प कर सकता है उनमें. वन इज गोइंग टू बी इंग्लिश, देन वी हैव लीगल रीजनिंग, एंड देन वी हैव जीके. Is there any other section that can be benefited by reading newspapers? Yes, we have one last section, and that is going to be critical reasoning. So critical reasoning again is a section जिसमें equal weightage दी जाती है as compared to the English section, और वो भी full of reading है. अगर आप opinion page, I'll write that down here, ओपिनियन पेज या एडिटोरियल पेज पढ़ते हो, these are full of opinions of the author. These are full of arguments by the author. क्रिटिकल रीजनिंग का सारा खेल आर्ग्यूमेंट्स पे डिपेंडेंट होता है. अगर आपको आर्ग्यूमेंट समझ आ रहा है, 50% of your battle is already won with critical reasoning. The remaining critical reasoning can be mastered by understanding the concepts that we'll cover up in our classes. But if you are unable to identify the argument of the author, how will you on earth even get ahead with the concepts? So, opinion and editorial page are going to be very, very important for your ability to identify the argument of the author. So, make sure you focus on these pages. So, critical reasoning and analytical reasoning skills, they are going to be improved by reading, just a minute, the newspaper. Now, there comes a question, ma'am. If I am reading newspaper and if I'm targeting CLAT 2025 and I started as soon as today, what should I read? उस question को answer करने से पहले एक quick recap. हमने अभी तक क्या देखा? Reading newspapers is an indispensable part of CLAT exam preparation. I like to call newspapers a package. It is a package. Why is it a package? Because ये आपको बहुत सारे sections एक साथ prepare करने में help करता है. I can recommend one separate book for English, one separate book for legal, one separate book for GK. But if you ask me about a package, this is it, and that is newspapers. So initially it might be time consuming and boring for you because you haven't done that in a lot of years. लेकिन once you get the hang of it, और जैसे ही आपको आदत लगती है और आपको बैकग्राउंड की न्यूज पता होती है कि ठीक है बैकग्राउंड में ऐसा चल रहा है, मणिपुर में ये चल रहा है या दिल्ली में ये चल रहा है या केरला में ये चल रहा है, आपको पता है बैकग्राउंड, आपके लिए उसको लिंक करके याद करना जीके के फॉर्म में, रीजनिंग के फॉर्म में, इंग्लिश के फॉर्म में, वोकैबुलरी के फॉर्म में बहुत इजी हो जाएगा. So be very, very consistent with the newspapers. It's something that every single person as a CLAT mentor will recommend. Reading newspapers is absolutely necessary. It's indispensable. Okay, you will improve at various sections, but make sure you do one thing, and that is regularity. Newspapers would not benefit you if you are not regular. Regular means every day. A few days you can miss them when you have your examinations going on, but not more than that. If you're traveling, make sure you find time. If you're doing your regular household work, if you're in a regular routine, make sure this is a part of your routine. So, newspapers need regularity. Regularly पढ़ते रहोगे तो समझना आपको आसान होगा, आपके लिए related जीके निकालना आसान होगा, नहीं तो सब कुछ नया लगेगा और कुछ भी नहीं समझ में आएगा और बड़ा बोरिंग लगेगा. And that's not what our target is. Our target is to fall in love with newspapers. तो रेगुलरिटी दिखाइए प्लीज अपनी न्यूज़पेपर्स में. अब क्वेश्चन आता है मैम व्हाट शुड आई रीड इन द न्यूज़पेपर्स, क्योंकि न्यूज़पेपर्स इतना लंबा है, इट टेक्स मी मोर देन 2 hours टू फिनिश द एंटायर न्यूज़पेपर. कितने लोग इस बोट में सेल करते हैं? How many of you think I take more than 2 hours or I take a lot of time reading the newspapers? Before I tell you what to read, you could answer this. How many of you sail in the same boat? आपको बहुत टाइम लगता है न्यूज़पेपर्स पढ़ने में. How many of you sail in the same boat?
You take a lot of time. Yeah? Yes. Yes, that's going to happen initially. But let me make life easier for you by telling you आपको किस तरह की न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, बाकी न्यूज़ आप स्किप कर सकते हैं. फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, नेशनल न्यूज़ और पॉलिटिक्स. लेकिन व्हेन आई से पॉलिटिक्स, आपको बहुत केयरफुली पॉलिटिक्स समझना पड़ेगा. यू shouldn't be bothered about who is fighting with whom. लेकिन कैसे कंट्री का पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज हो रहा है, क्या पॉलिटिकल चेंजेस आए हैं या इम्प्रूवमेंट्स आए हैं, या कंट्री का पॉलिटिक्स में कुछ लैंडमार्क आपको दिख रहा है, इस तरह की चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है. नेशनल न्यूज ऑफ कोर्स, कुछ भी स्टेट लेवल पे या कंट्री लेवल पे हो रहा है, कोई भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, कोई भी मेजर इवेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट. आपको उन चीजों पे ध्यान देना है. सो अभी देखिए कौन से स्टेट्स अभी न्यूज में हो रहे हैं. ओके. ओके, दृष्टि. ठीक है. चंद्रेश आंसर करते हैं क्वेश्चन. बट दृष्टि का पहले क्वेश्चन आया कि मैम टाइम्स ऑफ इंडिया बेटर है क्या. आई थिंक मुझे क्वेश्चन पहले आंसर कर देना चाहिए था. जब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं और जब मैं बात करती हूँ न्यूज़पेपर्स पढ़ने की आपसे, आई एम recommending only and only one out of the two newspapers, and that is either the Hindu or the Indian Express. मैं और कोई भी सेकंड इसके अलावा थर्ड न्यूज़पेपर नहीं रेकमेंड करती हूँ, बिकॉज यू नीड अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ लैंग्वेज जिससे जिससे आपको कंफर्टेबल होना है, और वो लेवल आपको ये दोनों न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड करते हैं. सो आप इन दोनों में से एक न्यूज़पेपर चूज कीजिए जो आपके लोकेलिटी में आता है. नहीं आता तो आप ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले सकते हो द हिंदू का, बट स्टिक टू ओनली वन आउट ऑफ द टू न्यूज़पेपर्स. ठीक है. अभी बात करते हैं नेशनल न्यूज और पॉलिटिक्स की. ठीक है, ये आपको पढ़ना है. नेक्स्ट, आप लीगल न्यूज और लैंडमार्क जजमेंट्स को बहुत 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 ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये जीके और लीगल दोनों सेक्शंस में आ सकता है. सो कोई केस है, सिग्निफिकेंट कोर्ट केस, फॉर एग्जाम्पल अभी लेटली कुछ टाइम से हम LGBTQ केस के बारे में बहुत पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर में, तो देखिए उसमें क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कोई लीगल रिफॉर्म्स आ रहे हैं क्या. प्रोबेबली आने वाले कुछ महीनों में अगर कोई लीगल रिफॉर्म आता है LGBTQ केस का, तो वो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स है, कोई लैंडमार्क जजमेंट होता है, आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे. Alternatively, I think Nivedita ma'am also covers up these legal news and landmark judgments. Keep a track of her sessions. Okay. I think Shurajit sir and Nivedita ma'am करते हैं, तो please उनको follow करिए YouTube पे. You will find these sessions on our channel. Okay. Then constitution issues and amendments. देखो ये बहुत frequent होते नहीं है because they take a lot of time. But अगर ये हुआ है तो ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अगेन ये लीगल और जीके दोनों में आ सकता है. तो कोई भी आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू की बात करता है या अमेंडमेंट सजेस्ट करता है, अगर अमेंडमेंट ना भी हुआ तो भी सजेशन आया है, आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे, बिकॉज इट्स अ कोर इशू दैट्स गोइंग ऑन इन द कंट्री. और वो आपको, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है, वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के बारे में बहुत इजीली समझाएगा, आपके फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में समझाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स के बारे में समझाएगा. सो मेक श्योर इफ देयर इज एनी इशू दैट्स ब्रूइंग अप इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ देयर इज अ डिबेट दैट्स हैपनिंग फॉर एन अमेंडमेंट, make sure you follow that wholeheartedly. And then we have international affairs and treaties. G20 is one of those topics जो पिछले कुछ महीनों से बहुत न्यूज में आ रहा है, अभी भी न्यूज में आएगा, इस साल के एंड तक न्यूज में आएगा. आप हमारे कंट्री के क्या रिलेशंस हो रहे हैं with China, with Pakistan, with USA. We've just had a Buddhist summit in Delhi related to international affairs and treaties. Please read them very carefully because these are diplomatic matters और उन पे questions आ सकते हैं. And last but not the least, my favorite section, and that is going to be editorials, opinion pages. अगर आप द इंडियन एक्सप्रेस देख रहे हैं तो वो एक्सप्लेन्ड एंड ओपिनियन, ये दोनों पेजेस आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है. अगर आप द हिंदू पढ़ रहे हो तो आपको ओप एड, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट एंड
दैट्स ऑल आई थिंक। ये दोनों पेजेस आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। ओके, ओपेट एंड एडिटोरियल, यस, एडिट पेज, ये 3 पेजेस आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। सो दिस इज फॉर द इंडियन एक्सप्रेस, दिस इज फॉर द हिंदू। प्लीज मेक श्योर यू रीड दीज आर्टिकल्स वेरी केयरफुली पर्टेनिंग टू द टॉपिक्स जो मैंने आज आपको क्लास में बताए हैं। When you read them, you get comfortable with the idea of reading because the entire paper of CLAT is dependent on your ability to read, comprehend in a quick manner. तो प्लीज ध्यान दो इन पेजेस पे, इनको टाइम बाउंड पढ़ने की कोशिश करो, इनसे वोकैबुलरी निकालो, इनसे एवरी डे एटलीस्ट 5 to 10 वर्ड्स निकालिए, प्लस फोकस ऑन द आर्ग्यूमेंट्स बाय द ऑथर। क्योंकि जब आप आर्ग्यूमेंट्स को एनालाइज करते हैं, आप ऑटोमेटिकली क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, लीगल रीजनिंग सब में इंप्रूव करते हैं। तो ये एक चीज आपको बहुत डिटेल में पढ़नी है न्यूज़पेपर्स में। That was going to be all for today, everyone. If you're targeting for CLAT 2024, we have a comprehensive course that we've launched. That's the number of our counselors. Make sure you speak to them and know more about the program. I'm going to be coming live on our app on 21st of May 6 p.m. for a workshop. वर्कशॉप में हम डिस्कस करेंगे आपकी स्ट्रैटेजी, अगर आप क्लैट 24 टारगेट कर रहे हो तो कैसे आप अपनी ड्रीम एनएलयू में वो सीट इंश्योर कर सकते हो। Remember to attend the session live and do not leave the class without liking the video. You can comment under my video if you have questions. I will be very happy to answer these questions. You can follow us on Instagram, Facebook, Telegram, and download our app on Google Play. The details of these are there under my video in the description box. That is going to be all for today, everyone. Have a very, very good evening. God bless you. मैम रेड द टाइम्स ऑफ इंडिया, चंद्रेश अब आप आई थिंक टाइम है आपको ग्रेजुएट करने का टू द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। ओके, कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन कमेंट अंडर माय वीडियो, आई और माय टीम विल आंसर टू योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड इवनिंग।